Good morning, student. Today we are here to discuss another topic from the chapter Data Representation. The topic is Unicode encoding scheme. In my last video, I have discussed with you that there are various encoding schemes which are accepted worldwide, like ASCII, ISCII, ASCII we have discussed American Standard Information Interchange. ISCII we have discussed Indian Standard Form of Information Interchange. Now we are going to discuss Unicode encoding scheme. Unicode is a universal code that is accepted worldwide for digital conversation. When we say encoding, that means we are changing the data in a form that can be transferred digitally over internet. So Unicode defines multiple encoding schemes to represent characters. Various encoding schemes are available. One of them is UTF-8 and another one is UTF-32. First of all, we'll discuss about UTF-8. UTF stands for Unicode Transmission Format 8. UTF-8 is an 8 bits called octet. It मेक्स वेरियस ऑक्टेट्स. 8 बिट को हम ऑक्टेट कहते हैं. जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हर डेटा किस या तो 8 बिट में होगा, 32 में होगा, 64 में होगा, जो कि पावर चलती है. तो 8 बिट का जो ट्रांसफॉर्म है, ये ऑक्टेट जो है, यूटीएफ इसी फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र करता है. डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़ ये 1 से लेके 6 ऑक्टेट्स तक यूज़ करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए. अगर डेटा की ASCII वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, 0 से लेके 127 के बीच में लाई करती है, तो इट विल यूज़ ओनली 1 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन. अगर वैल्यू 128 से 2047 के बीच में लाई करती है, इट विल बी यूजिंग 2 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन. इफ द वैल्यू विल लाई बिटवीन 2048 to 65535, it will use 3 octet representation. And if the value will go from 65536 to 2097151, it will use 4 octet representation. Let us talk about 1 octet representation. If the values are lying between 0 to 127, it will only use 1 octet. These 7 bit will be representing the character, and this 1 bit will be fixed for 0. For example, this is an example given for the binary code of letter S. I have already told you that capital A will start from 65. Then you can bring it down to S and find out what will be the binary conversion of that number. You will find this answer only. I'll be teaching you how to do that as well. UTF-8 2 octet representation. Now the number will be lying between 128 to 2047. Then it will be representing it through 2 octets. In 2 octet system, these 3 and these 2 bytes will be fixed. They will be 110 Rest all bytes will be filled by the binary equivalent of the number. Similarly goes for UTF-8 3 octet representation. In this 3 octets will be sent, in which these bits will be fixed and rest all bits will be filled by the binary equivalent of the number. And if the number goes from 65536 to 2097151, then there will be 4 octets, and each octet, these bits which I have written with the red color, they will be remain fixed and rest all will be filled by the binary equivalent of the number. See, in 2 octet you will be a better understanding. The binary number is this 00111110001. तो ये हमारा बाइनरी नंबर था, जिसको हमने पीछे से फिल करना शुरू किया इन ब्लॉक्सेस में, और जो भी स्पेस खाली बचा वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 2 0 फिल कर दिए. इन दिस वे दीज ऑक्टेट हैव बीन फिल्ड. बट UTF-32 सेज दैट वी हैव अ फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन. देयर विल बी 3 ऑक्टेट्स गोइंग फॉर 32 bits going for each value, and fill the rest spaces with 0 that are normal. But each time भले वो नंबर किसी भी लेवल में रिसाइड करता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नंबर अगर 1 भी भेजना है, दैट मीन्स सारे 0 और लास्ट वाला 1, तब भी 32 बिट एनकोडिंग ही यूज़ की जाए. दैट इज़ कॉल्ड UTF-32 फिक्स्ड लेंथ रिप्रेजेंटेशन. So this is all for this video. Questions till then, you please revise all the conversions that I have given you till now, so that we can proceed to the next in the next class. Thank you so much.